Hello everyone, welcome to our next video. Today we will discuss relationship between constitutional law and administrative law. Constitutional law and administrative law are interrelated with each other. While administrative law deals with the organizations, powers, functions and duties of administrative authorities. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो बात करेंगे हम, वो मेन फोकस करता है पावर्स, फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के बारे में. वेयर एज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील्स विद द general principle relating to these organizations and their powers and the relationship of these organs with the individual. So clearly इसमें पता चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का जो फोकस होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो फोकस होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की पावर पे होगा. वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम जनरल प्रिंसिपल्स को डिस्कस करें. इन सिंपल टर्म इट कैन बी सेड दैट द स्ट्रक्चर पर्टेनिंग टू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वेयर देयर फंक्शंस आर डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का, वो सब्जेक्ट मैटर होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फंक्शन होगा कि अथॉरिटीज़ कैसे अपना वर्क परफॉर्म कर रही है. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ refers to laws that are related to the rights and responsibility of different branches of a state government. Constitutional law is the basic law upon which all other laws of a state are created. Example of constitutional law includes United States Constitutions, State Constitutions, the Bill of Rights. Whereas administrative law to be a division of constitutional law because bureaucratic branches act under the delegation of powers. The next is administrative law. Describe the way in which bureaucratic agencies can fulfill the operations and responsibility of their branches. Thus, the administrative law is created to help bureaucratic functions within the promoter of the state government as defined by constitutional law. Example of administrative law: the Food and Drugs Act, Civil Rights Act of 1965 and so many other acts. So simply please remember that the constitutional law deals with the general principles, whereas our administrative law mainly deals with the functions of administrative authorities. Thank you.